In our previous lecture, we discussed about physical quantities and also units, the base quantities, and how these base quantities are represented. And we discussed it with the help of base quantities like mass, length, and time and their units. Now, let's talk about system of units. In this lecture number 3, we will learn about different system of units that were considered to measure different kinds of quantities. So there are three kinds of system of units which were used in earlier times, and now another system is being used like CGS system: centimeter, gram, and second. Centimeter is for length, meter to be precise, L, and G gram mass, and S means time. And there was another system, MKS: meter, kilogram, and second, which was already discussed in our lecture number. Now there is another system of international units. System of international units. From its name, it is clear that this system of units is accepted internationally. Why do we use SI, international word, in this naming system? Because आपको पता है कि पहले जब लोगों की लेन देन होती थी, ट्रेड होता था, तो वो एक दूसरे से चीज़ें तब्दील करते थे कि मेरे पास ये चीज़ है, आप ये मुझसे ले लो, ये हमारे उधर इलाके में ज़्यादा होती है, और वो चीज़ आप मुझे दे दो, वो आपके इलाके में ज़्यादा होती है, तो उन दोनों का मसला हल हो जाता था। लेकिन फिर एक कन्फ्यूजन आ गई, ट्रेड में मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी मेरे पास अगर कोई चीज़ है, इफ़ आई हैव एनी सब्सटेंस एनीथिंग, और मैं उसको पाउंड में लेकर आ रहा हूँ, और जो आपके पास चीज़ है जो मेरे काम की है, जो मैं इस्तेमाल करूँगा, वो किलोग्राम में लेकर आता था, then the confusion arise due to the different units. Then another system of units is created, in which units of base quantities were discussed and assigned and were accepted internationally. That's why the word international is substituted, is named in a system of international units. इंटरनेशनल इसमें क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बैन अवी सतह पर ये जो यूनिट सिस्टम है ये एक्सेप्ट किया जाता है, और उसमें फिर मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को रखा गया, और उन क्वांटिटीज़ की तादाद जो थी 7 थी। 7 डिफरेंट क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट्स असाइन किए गए उनको, एंड नाउ दे आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, internationally. Means you can use a kilogram anywhere you go on the planet Earth. Similarly, you can use meter anywhere you go on the globe of Earth. So that's why system of international units were created. It was a meeting, it was an international meeting held in the Paris, into a center called I think it is the International System of Weight and Measurements in Paris, and it was considered that these 7 quantities as these base units which are accepted globally, in order to overcome this kind of confusion कि जी मेरे पास जो चीज़ है वो मैं किलोग्राम में लेकर आऊँगा, और जो आपके पास चीज़ होगी वो भी आप किलोग्राम में लेकर आओगे, ताकि जो ट्रेड हो वो आसान हो जाए। एंड दैट इज़ द गोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स हमें क्या करके देती है? हमें चीज़ों को आसान करके देती है, बिकॉज वी मयर थिंग्स, और मयरमेंट्स के लिए हमें फिर यूनिट्स चाहिए, और फिज़िक्स हमारी इस तरह से हेल्प करती है। तो हम इस लेक्चर में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ दी और ये चीज़ें पढ़ दी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो ये सब करने से पहले आप वो सुन लें।
Let's further talk about system of international units. This system is accepted globally, and it was decided that these are the quantities which are accepted with this unit when you go it internationally anywhere on the planet Earth. So these seven quantities. One of them is length. This is the name of quantity. Similarly, other quantity was mass, amount of substance, anything here is called mass. Length, you know already about length, that this is the distance between two points. And similarly, time, it is the smallest event that can happen between two occurrings. Similarly, temperature, it is the degree of hotness or coldness or average kinetic energy of any object is called temperature. This is the modern definition according to your class level. Similarly, amount of substance, you will learn amount of substance in the details in a subject of chemistry. Length is represented by L, mass is represented by small m, time is represented by T, temperature is represented by capital T, and amount of substance is denoted by MOL. It is its name symbol. These are the name symbols. L is the name symbol of length, distance, and M is similar the name symbol of mass. And these quantities are represented with the help of meter, small m, and mass is denoted by represented by kilogram. When you specify any kind of mass, you will use number and kilogram as its symbol. M is the naming symbol of mass. Similarly, time is denoted by second, and temperature is measured with the help of Kelvin. Kelvin scale, it is a scientific scale of measuring the temperature. The average kinetic energy of molecules of any substance. An amount of substance is denoted by mole. Now check the difference between this and this name. Mole has capital M and this mole has small m. This is its unit symbol and this is name symbol. So these are five quantities. Other two are electric current. You will learn about electric current in your next classes. So in small words, you can say that it is the amount of charges that are flowing through a electric conductor, and it is measured with the help of a capital M. Now, capital A. Capital A represent ampere. Ampere was a scientist which gave the idea about electric current. And intensity of light. Intensity of light. It is represented with the help of C, capital C and small d. So current is denoted by its name symbol is I, and intensity of light is its name symbol is LUX, lux. These are the naming symbols of these two quantities, and A is the unit symbol of electric current, and CD is the unit symbol of intensity of light, and its naming symbol is lux. हाँ, तो फिजिक्स में ये वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है। ये वो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनको इंटरनेशनली इन नामों से पुकारा जाता है। फासला या लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मुख्तलिफ ये लेंथ के नाम हैं। लेकिन इंटरनेशनली अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, फासला, तो आप उसको फिजिक्स में लेंथ कहोगे। सिमिलरली मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। टाइम के बारे में आपको पता है, टेम्परेचर किसी भी जिस्म में जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मूवमेंट की एनर्जी होती है, उसको टेम्परेचर कहते हैं। इसको कैपिटल टी से लिखा जाता है। और केल्विन, मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, इट इज़ अ केल्विन स्केल। हम टेम्परेचर को डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इट इज़ मेजर्ड इन केल्विन। और उसकी सिंबल क्या है? कैपिटल के। और बच्चों इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसको मोल से लिखा जाता है और स्मॉल MOL से
उसके यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये हम 10th क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक तार से, मेटालिक तार से अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट which is represented with the help of lux as its name, and CD कैंडला, मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, कैंडला, ये इसका यूनिट है। तो ये हो गया ऐसा यूनिट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा फिजिक्स के इस एनवायरनमेंट में। ये हमें सिंबल्स होंगी जो हमें इसी तरह याद रखनी होंगी। आप एल को स्मॉल एल लिखोगे, कैपिटल नहीं लिख सकते। मास को आप एम से लिखोगे, टाइम को स्मॉल टी से लिखोगे, और कैपिटल टी टेम्परेचर की हो जाएगी। सिमिलरली एम्पेयर ये मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, और इसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो रोशनी की शिद्दत होती है, उसको लक्स से, उसके नाम से लिखा जाता है। और CD कैंडला उसका यूनिट है। तो जब भी हम फिज़िक्स में कोई डेली लाइफ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो ये निशानियाँ एज द नेम ऑफ यूनिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये उसके यूनिट की सिंबल। तो इस तरह हमारा ऐसा यूनिट, यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हो गया। और इसके अलावा आप प्रीवियस टॉपिक जो है वो उसको भी अच्छे से देख लें, पढ़ लें। अब मैं इस टॉपिक के और पिछले टॉपिक के नोट्स साथ अभी मैं अपलोड कर दूंगा।